Hello and welcome back to my channel. So today we are doing something really interesting. I have a friend who has a brand, a cosmetic brand where she creates natural products, vegan products with no animal cruelty and using all the natural things, the leaves and all of that. So we are sort of shooting an ad for her, and we are at Hoskas Fort. um, and yeah, I am going to take you to this journey of shooting this ad for Khloe Organic Essential, and the actor's name is Payal Sehgal. We also have my sister Shruti and another actor from Bombay, Param. Hello, hi Shruti, how are you? I am good. A very good morning to you all. Good morning. Are you excited for the shoot? Yes, it's an early morning, but not really that early, but still early. And yes, we are looking forward to shoot it. All right. Hi Param. Hi, How are you? very good. How are you? Super well. Are you excited for the shoot? Very excited. Great How do you like the performance, location? How do you like the fort? The location is good. We are in a good time, I guess. It's a good light, so we can play around. We can surely play around, Let's do it. and let's see what comes up. All right. And this is our actress Actress and the founder. and the founder of Khloe Organic Essential. Are you excited for the shoot, Very Payal? excited. Hi to all. Good morning. Good morning. Let's do it. Let's. Payal, could you please tell us a little bit about your brand? So, Khloe Organic Essential is, based on the concept of fresh, made on order beauty products, skincare products. So, in which there are no preservatives, made of all natural ingredients, all organic ingredients, mix of both actually, and it doesn't have any harmful chemicals. So, embracing the nature and trying to cut down on chemicals, because we are already breathing a lot of chemicals and toxic things. So it's just an initiative to inculcate some kind of skincare in your life which is purely based on nature and organic products. So this was my concept, and I want people to focus on this, because if you are if you are considering food as a very important element in your life, where you eat fresh food, so for skin, the fresh food is the skincare what you do, nature. So I think there is nothing beautiful than nature, and nature always works the best. So this is Khloe Organic Essential, straight out of nature's lab. इसको ब्लू लाइट से लाइट, ठीक है? ये तो अपने आप से देख. बेसिकली तेरे को लाइट रिफ्लेक्ट मारनी है फेस पे, और कुछ बस. नहीं 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 नहीं.
इसके साथ। The good thing about technology is कि आप फ़ोन से ही कितनी बढ़िया चीज़ें बना सकते हो। मतलब और ये जो DJI है जो हम यूज़ करते हैं, इट इज़ ऑल्सो लाइक वेरी लिटिल कैमरा, बड़े आराम से हाथ में आ जाता है। सो लाइफ इज़ वेरी ईजी। एंड लेट्स गो बैक टू द शूट। हाँ, Param, so for the people who want to shoot in low budget, could you tell us a little bit कि कैसे मतलब low budget में हम shoot कर सकते हैं, मतलब how much money are we spending on this shoot? What are the things that we need? Right. और आप प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ बिल्कुल। सो बेसिकली जो हम आज शूट कर रहे हैं, इट्स एक्चुअली अ प्रोडक्ट शूट कॉस्मेटिक ब्रांड का, एंड द मॉडल दैट वी हैव इज़ एक्चुअली द ओनर ऑफ द ब्रांड। सो बेसिकली हमने किसी को हायर नहीं किया, वी आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्स। जो ओनर है, शी इज़ प्रिटी, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ कॉन्फिडेंट, सो वी यूटिलाइज। एंड ऑन द अदर हैंड एज फ्रेंड्स, सो इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। वी नीड अ टीम। कुछ भी शूट करने के लिए हमें टीम की ज़रूरत पड़ेगी। So whenever you're shooting something, be open to your friends, be open to your work culture, express yourself that this is the project that you're working on. जैसे कि हम आज एक शूट कर रहे हैं, so we required around 3 to 4 people. एक कैमरा पर्सन, एक प्रॉप हैंडलर, एंड कॉस्ट्यूम एंड एवरीथिंग इज़ हमारा घर का, तो उसका कोई खर्चा नहीं है। एक हमने रिफ्लेक्टर ले लिया जस्ट इन केस फॉर द गुड लाइट, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती व्हेन इट्स अ नेचुरल लाइट। हालांकि वो एक नॉट अ कंपल्शन कि आपको वो चाहिए, बट स्टिल इफ़ यू हैव दैट इट्स गुड। फेस पे थोड़ी अच्छी लाइट आ जाएगी, आप लाइटिंग के साथ खेल सकते हो। अपने आज के कैमराज, जो भी आज के कैमराज हैं, दे आर वंडरफुल। सबके पास बहुत अच्छे कैमराज हैं विच यू कैन शूट एनीथिंग। सो एंड अपार्ट फ्रॉम इमेजिनेशन, ऑब्वियसली अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके कि ओके दिस इज़ द फ्रेम दैट यू वांट और ऐसा कुछ दिखाना है, जस्ट शूट। देन कम्स द एडिटिंग पार्ट वे यू कैन प्ले अराउंड। बस आपके पास शूट करने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे, सिर्फ एफर्ट्स लगेंगे। मैनेजमेंट पैसे अगर हमारे लग रहे हैं तो रिफ्लेक्टर है हमारा। हाँ, जो हमने लगाया है पैसा, हमने रिफ्लेक्टर खरीदा जो कि हमारे पास नहीं था, विच केम अराउंड 950 रुपये का। फ़ोन्स हमारे पास थे, हमारे पास 2 आईफोन्स थे, हम दोनों आईफोन्स पे शूट कर रहे हैं। एंड हमारे पास 2 शूटिंग पर्सन हैं, मैं शूट कर रहा हूँ और मेरे साथ शिवा शूट कर रही है जिसने अभी भी कैमरा पकड़ा हुआ है। सो हमारे पास 2 कैमरा पर्सन है टुडे। और हमारे साथ श्रुति हैं विच इज़ हैंडलिंग द प्रॉप्स, वो फ़िल्टर हैंडल कर रही हैं, वो बाकी सामान उठा रही हैं, हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं। तो सो इट्स जस्ट टीम वर्क, बेसिक टीम वर्क। आपको 4 लोग चाहिए एक अच्छा प्रिंट शूट करने के लिए, कैटलॉग शूट करने के लिए, एक इंस्टाग्राम अच्छी रील बनाने के लिए, एंड एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए भी आपको 4-5 लोगों की ज़रूरत है, डिपेंडिंग अपॉन द कंसेप्ट। द कॉन्सेप्ट इज़ द गेम कि आप करना क्या चाहते हो। अगर आपकी दुनिया छोटी सी है, अगर आपको 2 लोग दिखाने हैं तो 4 लोग बहुत हैं। अगर आपकी दुनिया बड़ी है, आपको ज़्यादा दुनिया दिखानी है, तो आपको ज़्यादा लोग लगेंगे। डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू परम। थैंक यू। आ जाओ भाई। So, thanks to Param for sharing his insights on how to do a low budget shoot, and let's continue.